हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का यूनिट 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इनको अच्छी तरीके से देखिए। आज बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। मेंशन द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा लिखा हुआ है लास्ट ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसको अच्छी तरीके से लिखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप पूरे तरीके से इस आंसर को कॉपी कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे नोट्स के, लेकिन फ्री नहीं है, पे करके आपको लेना होगा। और अगर आप फ्री चाहिए तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख के नोट डाउन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आंसर देख सकते हो, कस्टम ड्यूटीज आर लेविड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री। फुल स्टॉप। एक्सपोर्ट ड्यूटीज आर लेविड ऑन ए फ्यू गुड्स as specified under the second schedule. Full stop. Import duties are not levied on a few items including life-saving drugs, equipments, fertilizers, food grains, etc. Import duties are further divided into basic duty, additional customs duty, true surveilling duty, protective duty, education cess and एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी। तो ये सारी ड्यूटीज के अंदर आता है। उसके बाद देखिए, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन इंपोर्टेड आइटम्स दैट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। फुल स्टॉप। These duties are levied at rates prescribed in first schedule to Customs Tariffs Act 1975 under the terms specified in section 2 of the act. The levied rates may be standard or preferential as per the country of import। तो ये सारे जो सेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इनको आपको करेक्ट तरीके से लिखना होगा। अगर आप एग्जाम में कुछ सेक्शंस गलत लिखोगे, सब सेक्शन गलत लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा देखिए, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जो सी है काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी। द ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्टेड आइटम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। फुल स्टॉप। इट इज इक्वल टू द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दैट इज लेविड ऑन सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया। फुल स्टॉप। This duty is calculated on the aggregate value of goods including BDC and landing charges. तीसरा देखिए, protective duty. Protective duty may be imposed to shield the domestic industry against imports as a rate recommended by tariff commissioner. उसके बाद देखिए नंबर 4, education cess. The duty is levied at 2% and higher education cess at another 1% of aggregate of custom duty. उसके बाद देखिए anti-dumping duty. Anti-dumping duty may be imposed if the good being imported is at a lower fair market price and is limited to the difference between export and normal price dumping margin. उसके बाद देखिए safeguard duty. Safeguard duty is levied if the government feels that a sudden increase in exports can potentially damage the industry, domestic industry. ठीक है, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मेंशन द प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर, द प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर एज कस्टम्स एक्ट। नंबर 1 देखिए, द टर्म प्रोहिबिटेड गुड्स हैव बीन डिफाइंड इन सबसेक्शन 33 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम एक्ट एज मीनिंग एनी गुड्स दैट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ व्हिच इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन अंडर द कस्टम्स एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। दूसरा देखिए, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम्स एक्ट द सेंट्रल government has the power to issue notification under which export or import of any goods can be declared as prohibited. First of the prohibition can either be absolute or conditional. तीसरा देखिए, अंडर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी लेड डाउन बाय द DGFT इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सर्टेन गुड्स एंड प्लेस्ड अंडर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अंडर सेक्शन 3 and 5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक प्रोविजंस फॉर प्रोहिबिटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग और अदरवाइज रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। चौथा देखिए, अनदर रिस्ट्रिक्शन अंडर द aforesaid notification issued by the Ministry of Commerce is that the import of a large number of products presently numbering 133 are required to comply with the mandatory Indian quality standard IQS, and for this purpose exports of these products to India are required to register themselves with Bureau of Indian Standards BIS. First of non-fulfillment of the above requirements shall render such goods प्रोहिबिटेड फॉर इम्पोर्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में बाकी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आई आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।